Student, see question. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BP and PC, into which BC is divided by point of contact P, are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find other side AB and AC. स्टूडेंट ट्रायंगल ABC के अंदर ये सर्किल सर्कमस्क्राइब है और P क्या है, BC वाली साइड पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. नाउ CP इज 6 सेंटीमीटर एंड BP इज 8 सेंटीमीटर. तो ये टोटल 14 सेंटीमीटर की साइड है BC. हमें अदर टू साइड बतानी है, यानी AB एंड AC कितना होगा. स्टूडेंट, उसे करने के लिए पहले मैं यहाँ सेंटर O लेता हूँ और सेंटर O लेने के बाद अदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में Q एंड R लेता हूँ. AB का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q एंड AC का R. नाउ जॉइन OP, OQ, OR and also OA, OB, OC. Now BP is equal to BQ equal to 8 सेंटीमीटर. यह हमें दिया हुआ है BP is equal to BQ क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से दोनों टेंजेंट है एंड BP कितना है 8 सेंटीमीटर है तो BQ भी 8 सेंटीमीटर. ऑल्सो CP is equal to CR. पॉइंट C से बोथ टेंजेंट एंड CP 6 सेंटीमीटर है तो CR भी 6 सेंटीमीटर है. दोनों की लेंथ इक्वल होगी. Region is tangent from an external point to a circle are equal. Now let AR is equal to AQ. This is also a tangent from point A is equal to X. यहाँ X मान लेता हूँ. Since OQ is equal to OR is equal to OP 4 centimeter, all are radii of the same circle. Now semi-perimeter of triangle ABC S is equal to this X plus 6 plus X plus 8 plus 6 plus 8 upon 2, that is sum of the three sides. One side is x plus 6, that is AC, another side AB is x plus 8 and another CB is 6 plus 8, that is 14. Now it will equal to x plus 14 centimeter. So area of triangle ABC will be under root S minus A, that is side of one side, into S minus B other side and into S minus C another side. Now put the value of S and the other sides. So first S will be x plus 14. Next x plus 14 minus 14, that is side BC. Now x plus 14 minus x plus 8, that is side AB. Now next is x plus 14 minus x plus C, that is side AC. On solving, what will you get? Under root x bracket x plus 14 and this x is neglected by this minus x. And also in second bracket x is neglected by this minus x. So see, now 14 minus 8 is 6 and 14 minus 6 is 8. So 8 into 6 is 48. So 48x into x plus 14. 48 में से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 16 into 3 और 16 में से 4 बाहर आएगा, अंदर 3 रह जाएगा. So root 3x into x plus 14 centimeter square is the area of triangle ABC. Mark it equation 1. Now हम किसी दूसरे वे से अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. Also area of triangle ABC is area triangle AOB, area triangle AOC plus area triangle BOC. इन तीनों से ही मिलके बन रहा है ये ABC ट्रायंगल जो है. Now area triangle AOB will be half AB into OQ. यहाँ पर AB बेस है एंड OQ परपेंडिकुलर है. Second area triangle AOC will be half AC into OR, where OR is perpendicular and AC is base. And area triangle BOC will be half BC into OP, that is BC base and OP perpendicular. Now EB की वैल्यू स्टूडेंट 8 plus x and OQ radius of circle is 4. Again AC की वैल्यू, AB की वैल्यू x plus 8 थी. Now AC की वैल्यू x plus 6 और OR again 4 radius. Now BC is equal to 14, ये हमने निकाला हुआ है, sum of the 6 plus 8 and OP is 4. Now student 2 से 4 को डिवाइड कीजिए यहाँ सब. So what will you get? 16 plus 2x, that is 2 into 8 plus 2 into x. Now 2 into x plus 2 into 6 is 2x plus 12. Now 14 into 2 is 28. So the sum will be 4x plus 56. This is also area of triangle ABC. Now from equation 1, 4 into root 3x into x plus 14 is equal to 4x plus 56.
नाउ 4 से 4 को कैंसिल आउट करिए, यहाँ 4 कॉमन लीजिए, पहले 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 14 बचा, 56 में से 4 आया तो 56 यहाँ पे बचा 14. नाउ 4 से 4 कैंसिल आउट. नाउ 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर. नाउ x प्लस 14 से x प्लस 14 का स्क्वायर कैंसिल आउट, so 3x is equal to x plus 14 and 3x minus x is equal to 14, that is 2x is equal to 14 and x is equal to 14 upon 2 is equal to 7 centimeter. Therefore side AC is equal to 6 plus x, that is 6 plus 7 is equal to 13 centimeter and side AB is equal to 8 plus x, that is 8 plus 7 is equal to 15 centimeter. Hence sides are done. Question is completed.